Hi, hello everybody. This is Usman, and today I'm going to do a shave with my Touch Me Shaving Cream. और हम सब ये जानते हैं कि ये काफ़ी एक पुरानी क्रीम है एंड इट्स एन ओल्ड स्कूल क्रीम फॉर शेविंग. जब मैं छोटा था तो मैं जब बार्बर के पास जाता था बाल कटवाने के लिए, तो वहाँ पे जो लोग होते थे वो इससे शेव करवा रहे होते थे. 1996, 1997, इवन दो इन 1995 ये प्रोडक्ट अवेलेबल थी, टच मी शेविंग क्रीम. तो भी स्टार्ट किया जाए. व्हाट डू यू से? अच्छा जी, शेविंग के लिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ रेज़र, इट्स बेसिकली अ डबल एज रेज़र एज यू कैन सी. और इसके अंदर मैंने डार्को का जो ब्लेड है वो लोड किया हुआ है. एंड आफ्टर दैट पहले मैं अपने फेस को सोक करता हूँ टू प्रिपेयर फॉर द शेव, एंड देन हम लेदरिंग स्टार्ट करेंगे, द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रोसेस. आज मैं बजाय शेव बाथरूम में करने के मैं रूम में कर रहा हूँ. सो आई सपोज टू बी वेरी केयरफुल कि किसी किस्म का पानी जो है वो ना गिरे बेड पे या. सो लेट्स सोक. हेयर ब्रश. So let's go for this Touch Me Shaving Cream. कुछ यहाँ पर लगाएंगे, कुछ यहाँ पर भी लगाएंगे. बहुत ही थोड़ी अमाउंट मैंने लगाई है एज यू कैन सी. सो लेट्स स्टार्ट लेदरिंग. ये हो गया टकना बंद, एंड आफ्टर दैट देखते हैं कि ये क्रीम कैसे शेव करती है. मेरे लिए शेविंग एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, स्पेशली लेदरिंग. तो मैं छोटा था तो मैं इंतज़ार करता था कि मैं कब बड़ा होऊंगा और मेरी शेव आएगी और मैं शेव करूँगा. अब वो मोमेंट्स आ गए हैं, गोल्डन मोमेंट्स, जब मैं अपनी बचपन की ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ. थोड़ा सा इसको पानी में डिप करेंगे, ये चीज़ बस, ताकि लेदर को और बनाया जाए. ओमेगा का मैं शेविंग ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, वेरी सॉफ्ट वेरी फाइन ब्रश. अच्छा एक बात नोट की है, रूम के अंदर में काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट हो गया है ना. सो लेट्स मूव इट लिटिल बिट क्लोजर. सो लेट्स यूज़ दिस डबल एज सेफ्टी रेजर. आई थिंक काफ़ी हद तक लेदर बन ही चुका है. So here we go, ladies and gentlemen, the most पहले हम ग्रेन्स के साथ शेव करेंगे.
I will shave across towards the grain, north to south. बहुत ज़्यादा रेजिड्यू इकट्ठा हो गया, so let's wash it off. अगर आप डबल सेफ्टी रेजर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बहुत ही केयर से शेव करनी पड़ेगी. स्लाइटली सी मिस्टेक आपको जो है वो टक लगा सकती है. लो जी, हमारा फर्स्ट पास कंप्लीट हो गया है. अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको करेंगे साफ, और देन वी विल गोना गेट रेडी फॉर द सेकंड पास. दिस टाइम आई विल गो अक्रॉस द ग्रेन, नॉट टुवर्ड्स द ग्रेन. सो लेदर अप अगेन. आज मैंने प्री शेव ऑयल यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ फॉर द शेव. अच्छा, पहले मैंने नॉर्थ टू साउथ की थी, अब मैं यूं कर रहा हूँ अक्रॉस द ग्रेन. फ्लिप द रेजर. Rinse off the razor. चलो जी, सेकंड पास भी कंप्लीट हो गया है. एंड द गुड न्यूज़ इज़ कि अभी तक मुझे कोई निक्स एंड कट्स नहीं लगे. सो इट्स मीन के आई एम डूइंग गुड टुडे. एटलीस्ट आपको 10 से 15 टाइम्स इस डबल सेफ्टी रेजर से शेव करनी पड़ती है टू गेट परफेक्ट. अब हम जाएंगे अक्रॉस, नॉट अक्रॉस द ग्रेन बट अगेंस्ट द ग्रेन. सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब हम उल्टा जाएंगे. Yes, rinse that off, and after that हम अगेंस्ट द ग्रेन जा रहे हैं इस वक्त.
So ladies and gentlemen, I'm done. I'm done. Shave is complete. So I will wash off my face in the toilet, in the bathroom, and then I will come back. If you know what I'm saying. तो मेरे पास टॉवल है, फेस मैंने सॉफ्ट कर लिया, मैं अपने टॉवल से अपने फेस को ड्राई करूँगा. One of the most finest quality shave I've ever done. Touch Me is doing awesome. Now I'm gonna use this Nextderm aftershave gel. तो कहीं भी अगर रेजर बर्न्स हो, कट्स और निक्स हो, तो वहाँ पे आप इसको लगाएंगे तो ये फौरी तौर पे उसको सील ऑफ कर देगा. दैट्स इट, इतना सा काफ़ी है. फिंगर्स के साथ को रब किया और हल्की सी बर्निंग सेंसेशन हो गया आपको. यू विल फील अ टिंगल, बट इट हैज़ अ वेरी नाइस smell, fragrance, you can say. So ladies and gentlemen, I'm done.